Om Sri Chinmaya Sadgurave. So the mantra number 15 of Kathopanishad, Prathama Adhyaya, Prathama Valli. Lokadimagnim tamuvacha tasmai ya ishtaka yavatirva yathava sachapi tat pratyavadat yathoktam athasya mrityuf punarevahatushtaha. So it has been covered. Okay. So few things we should tell. No, 16th has not happened. In previous days, mainly in Yagnashala, the Yagna Kunda was made with 720 bricks. Clear? And they used to do some friction between two logs of wood. It's not that there is a matchbox and they are doing like this, or previous Agni was there, or any lighter, nothing else. Because that mantra also we will get it. Now, there should be some friction between two logs of wood. That things should be done inside us. Inside us, the flame of Chaitanya, the inauguration of Parashakti, Brahma Vidya Rupi Parashakti. Ya Ishtaka Yavatirva Yathava. What kind of brick, how many, and how it will be formed and placed. So 360 days and 360 nights, they used to calculate. What I always tell you, that we have to be alert for 24/7. That Swamiji, tapasya kab karunga? Tapasya is for 24/7, 365 days, 365 nights. There is no holiday in spiritual life. In your worldly life, there may be holidays. Today there is no work. Today there is procession. Today there is Ram Navami. In spiritual life, each and every day is same. And that's why 720 bricks. So 720 days,
meditation, Shravan, Manan, Nididhyasan. It is represented by 720 tricks. And what is that friction? Omkar Adi mantra jap. Or what about you have heard from your guru, that Shravan Manan Nididhyasan. Vivek Vairagya Yukta Atma Kami Sadhak in a single pointed mind, day and night, with the support of Om Dhvani, ओमकार की जो प्रतिपाद्य विषय है, because Om is the representative of something. So what is represented by Omkar, that Satchid Ananda Swarup, Sukhatmak and Paramatma, will be the subject of meditation. How long? 360 days, 369, 24/7. It means whatever you do, that should be in a meditative way. You may be a student, you may be a householder, you may be a businessman, you may be anything else. To earn money, you have any sorts of profession, but everything should be in a meditative way. Like you have seen the kite in the infinite sky. The kite is flying here and there, up and down. Then so many play. But how it is possible? Because the string is in the wheel and it is controlled by something. Likewise, whatever we do, we should not forget Shravan, Manan, Nididhyasana and Dhyana. If that flame of Chaitanya ever lit up inside, it never gets put out. एक बार चैतन्य ज्योति अपने अंदर जाग गया तो कभी बुझता नहीं. यही अग्नि ब्रह्म विद्या की साधक को स्टेप बाय स्टेप उनकी जागृत स्वप्न सुसुप्ति की अनुरूप विषय हिरण्यगर्भ या ईश्वर पद में ले जाते. ईश्वर में अज्ञान की आवरण नहीं. Who is the Ishvara? Where there is no covering of ignorance. Because Ishvara is the always connected with the Parashakti, is the hub of Parashakti.
परमानंद की विषय, पराशक्ति, अखंड, एक रस, सच्चिदानंद। इसीलिए साधक अखंड अभेद ज्ञान और परमानंद अनुभव करके अपना शोक, मोह, क्षुधा, जरा, मृत्यु, they cross it. In this way, a spiritual practitioner crosses over all sorts of griefs, grievance, jealousy, desire, hunger, everything, all the shortcomings in human life. Because that shok, moha, shudha, pipasha, jara, mrityu, they are the dharma of mind. They are the dharma of prana. They are the dharma of sthula sharira. A sadhaka is absolutely free from that. एक साधक की चित्त एब्सोल्युटली प्योर होकर चैतन्यमय अहं के द्वारा, चैतन्यमय चित्त के द्वारा परमानंद की स्वाद लेते हैं हर वक्त। ब्रह्म विद्या रूपी पराशक्ति जिसके लिए ये अग्नि शब्द व्यवहार किया है इस उपनिषद में, ऐसे ही साधक विराट और हिरण्यगर्भ पद को अतिक्रम करके ईश्वर धाम में पहुंच जाते। जिनका हिरण्यगर्भ पद लाभ हुआ है, वो व्यक्ति का क्या होता है? न देश, काल, कार्य, कारण, ये मतलब मृत्यु, अविद्या, अज्ञान से पूरा के पूरा विमुक्त हो जाते हैं। इज एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम डेथ, मीन्स द फियर ऑफ डेथ। In this state of mind, in this state, a sadhaka gets a lot of aishwarya, wealth. It's not that my bank will be full of money. This is the spiritual wealth. A lot of occult power comes. But जो साधक विवेकी है, वैरागी है, आत्मकामी है, he or she doesn't like this occult power. वो इस हिरण्यगर्भ इतना वेल्थ, इतना संपद को डोंट केयर करके ईश्वर पद, जो परमानंद, आस्वादन करते। ये अग्नि ही उमा है, यही ब्रह्म विद्या रूपिणी पराशक्ति। इसी को ही वेद में सोम रस बताया गया है। इसे ही पान करके साधक पूर्ण काम हो जाते। और उनकी उपासना और यज्ञ की सर्वश्रेष्ठ अंतिम फल क्या है?
न पूरा जगत की जो प्रतिष्ठा है, आधार है, ईश्वर पद, अभय पद लाभ करते। सो यज्ञ या उपासना सोम यज्ञ में खत्म होता है। सोम मतलब उमया सह वर्तमान, मतलब सोम का मतलब है अखंड एक रस। तो सच्चिदानंदमयी पराशक्ति के साथ प्रकाशमान शिव, सोम याग की अर्थ है शिव और शक्ति का मिलन। तो यही उनकी सेकेंड बूंद था, वर, कि स्वर्ग या आनंद प्राप्ति का उपाय अग्नि या ब्रह्म विद्या रूपिणी पराशक्ति की प्रकाश ही आत्मकामी साधक की द्वितीय वर है। क्लियर? दैट एक्स्ट्रा थिंग आई वांटेड, बट आई विल बी लोकादिम, the source of the world. Agni means fire or sacrifice. Tam, that, Uvacha said. Tasmai, to him. Ya means the class. Ishtakaha, bricks. Yavatihi, how many. Va means and. Yathava, and how to be placed. Saha means he. Cha, api, also. Tat pratyavadat, repeated back. Yathoktam, as explained. Athaha, so, asya, at this, mrityu, yama, punaha, again, even aha, being pleased. I told you that a teacher is always gets happy when his student can repeat or explain exactly what the teacher has taught. Even in this scrappy and skeleton draft of a story, Shruti Mata exhibits a perfection of touch and a delicacy of stroke in her art. She not only labors to throw as much colors as possible in the character of the hero, but also pauses now and then to brighten up the story with sheer touches of emotion to paint true life. It is a natural instinct with every school master to feel extremely happy towards that student who is marked at grasping the lessons at the very first hearing. This is a compliment to the master himself. And at the same time, he feels a satisfaction and fulfillment. Mrityu Devata had explained to his disciple the ritual
in all its details. But since this is Jnana Kanda, the details of this ritual are only mentioned in their broadest outline and hinted at by a mere enumeration of subheadings. So, strictly following the ancient method of teaching, here also Lord Death asks the student to repeat the lesson, and at the end of the instruction, Nachiketa stood the test well and repeated in all details the entire lesson. Mrityu Devata, feeling happy, very happy at this, blessed the disciples with extra boons. Tasmai lokadim tvam agni uvasa. यमराज जी, सारे सृष्टि की जो आदि है वो है अग्नि। आप विज्ञान को देखो, साइंस की किताब क्या बोलते हैं कि एक ही आग की गोला थी, उसमें स्फोटक हुआ, विस्फोट हुआ और एक मेन पोर्शन रह गया और बाकी सारे टुकड़ा 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 होकर घूमने लगा। उसमें से एक पृथ्वी है और वो आग अभी तक पूरा के पूरा बुता नहीं, इसलिए the inside kernel of this earth is still very hot. So Agni is the source of each and every created object. Clear? It's very clear. So यमराज उनको अग्नि के विषय में उपदेश दिया। तो वहां से पहला अभिव्यक्त रूप है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ इज सूक्ष्म, समग्र सूक्ष्म। द टोटल सटल माइंड इज हिरण्यगर्भ। लेकिन आफ्टर सटलिटी वी नीड द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रॉस, द टोटल ग्रॉस वर्ल्ड is called Virat. So, Sukshma, total Sukshma and total Sthula. The total subtle Virat and the total gross expressed world is Virat. Hiranyagarbha and Virat. Yamraj taught both the things to Nachiketa. And how that fire has to be collected. यज्ञ में क्या मंत्र कैसे करेंगे, सब उसमें क्या क्या सामग्री, कितना कुछ, because that yagna was the source to get everything else. Satsa 720 दिन रात। So what the extra boon Yamraj gave? Tamabravit priyamano mahatma
वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः श्रृंकां क्षेमाम् अनेकरूपां गृहाण। महात्मा प्रियमानः त्वम् अब्रवीत् इह अद्य एव तव भूयः वरं ददामि अयम् अग्निः तव एव नाम्ना भविता च अनेक रूपाम इमाम श्रृंकाम गृहाण। महात्मा, महात्मा के मतलब ऐसे नहीं, हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग एक संत दूसरे संत संत को बोलते हैं आओ महात्मा जी आइए। हम लोग के पास महात्मा मतलब समटाइम्स सार्कास्टिक हो जाता है, और नहीं तो असली मीनिंग भी हमारे पास ठीक ठाक से नहीं है। महात्मा मतलब कुछ ऐसा कुछ है, ऑकल्ट पावर है। महात्मा मीन्स हु इज हैविंग अ ग्रेट हार्ट। महान हृदय जिनके पास है उसे ही महात्मा। प्रियमान, खुश होकर, प्रीत होकर। त्वम अब्रवीत, तम मीन्स नचिकेता को, अब्रवीत बताए पास्ट टेंस, यह अबाउट दिस बोन, अद्य एव आज ही, इट्स नॉट टुमारो आई विल टेल, टुडे इटसेल्फ, तव मीन्स तुमको, भूयः फिर से, वरम ददामि मीन्स आई एम गिविंग यू द फोर्थ बोन। I told you to ask me three boons. I'm so happy with you that the extra boon I'm giving from my side. I am Agni. ये जो अग्नि चयन करके तो यज्ञ होता है, इस अग्नि का नाम क्या होगा? तव एव नामना, तुम्हारा ही नाम में इस अग्नि को बताया जाएगा। भविता, प्रसिद्ध होगा। च अगेन अनेक रूपाम, बहुत सारे, इमाम ये, श्रृंकाम बहुत सारे, माला, फिजिकल रूप में माला हो सकता है, सूक्ष्म रूप में बहुत सारे कर्म की तत्व मैं दे रहा हूं। गृहाण, तुम इसे ग्रहण करो। जब देखा कि शिष्य एकदम उपयुक्त है, एलिजिबल स्टूडेंट, त्वम अब्रवीत प्रियमानो महात्मा, यमराज बहुत खुश हुआ। एंड क्या बोले? वरम तवे हाद्य ददामि भूयः, और एक बार मैं तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हें तो तीन बार मैं दूंगा ही दूंगा, क्योंकि मैं प्रॉमिस किया है। आई हैव प्रॉमिस्ड, प्रतिज्ञाबद्ध। वो देगा ही, इसके बारे में चिंता मत करो। लेकिन तुम्हारे ऊपर मैं इतना प्रेत हुआ हूं, तुम्हें और एक बार दे रहा हूं। ऐसे मन है, क्या चाहते हो ये? अरे रख लो, चलो। ऐसे राजा होगा, क्योंकि मन हर वक्त ऐसे ही छोटा छोटा चीज में दिमाग नहीं लगा। इसीलिए कोई
कंजूसी नहीं। जो देगा बोला है वो तो देगा ही देगा। मर जाऊंगा पर वचन तोड़ूंगा नहीं। जो बताया है उससे ज्यादा दूंगा, वही तो मैं हूं। तवैव नामना भवितायम अग्नि। ये यज्ञ अग्नि का नाम आज से तुम्हारे नाम से ही होगा। सब लोग पृथ्वी में इस अग्नि को नचिकेता अग्नि बोलेगा। अच्छा। श्रृंकाम च इमाम अनेक रूपाम गृहाण। और मैं संतुष्ट हूं। इसके लिए ये माला मैं तुम्हें दे रहा हूं। रत्न, बहुत सारे रत्न। ऐसे रत्न जो एक के साथ दूसरा घर्षण में एक सुंदर शब्द उत्पन्न हो। यज्ञ की बात हो रहा है। हो सकता है माला की मतलब ऐसा कोई यज्ञ जो करने से बहुत कुछ फल मिलता है। मतलब जिसके बारे में, जिस यज्ञ के बारे में नचिकेता बताए भी नहीं, पूछे भी नहीं, वो भी विद्या नचिकेता को दे रहा है। और इसके नेक्स्ट मंत्र में यमराज जी नचिकेता यज्ञ की स्तुति करेंगे कि लोग जरूर नचिकेता यज्ञ करें। तो यज्ञ कोई ऐसा वैसा चीज नहीं। इफ वी परफॉर्म द यज्ञ इन अ वेरी माइन्यूट वे, इट्स वंडरफुल। So Mrityu Devata is offering here to his disciple a medal of appreciation in the form of a jeweled necklace. Bhagavan Shankaracharya ji in his commentary gives two meanings for the word Sringam. First one is garland, second one is action which shall yield many glorious fruits. Maybe Bhagavan Shankaracharya ji says Mrityu Devata might have initiated his disciple into some more secret methods of fulfilling the desires of mankind through mystic rituals and propitiatory ceremonies, or maybe Mrityu Devata presented this Brahmana boy with a chain studded with precious jewels. Whatever it may be, the purpose of the Shruti is served if we understand that the acute intelligence and the inordinate retentive capacity of the student have brought forth an applause from his own teacher. So Bhagavan Shankaracharya ji is compelled to bring out these two meanings separately because in द्वितीय वल्ली, पहला अध्याय का ही द्वितीय वल्ली में तीसरा मंत्र, the same term is used clearly meaning a path. The same meaning chain can also be accommodated in both the mantras. Here as ornamented and there as golden fetter. So one should be intellectually a Nachiketa
If one were to pursue the study of the Shastras and thus plan out one's own liberation, we may take the warning and understand that Brahma Vidya is to be pursued in the sannyasa ashram, not by illiterate scums of society who cannot seek and find success in life even when they have the chance to pursue their education fully. Harihi Om Tat Sat.